Hello guys, welcome back. Today we are with another video of soil mechanics. In this video we are going to discuss about Skempton bearing capacity formula. So according to Skempton bearing capacity, like, or you can say bearing capacity is denoted by or represented by QU, or Q ultimate bearing capacity, or we find bearing capacity in terms of QNU, net ultimate bearing capacity, that is equivalent to CUNC, right? So CU is for cohesive soil. CU is a cohesion in case of, like, in case of clay, right? I mean, in case of clay, right? Here this Skempton give a approach to find bearing capacity only for clay soil, right? Clay soil only, right? So this approach is only for clay soil. Skempton bearing capacity formula is only for clay soil. For clay soil, what will happen? The angle of internal resistance phi will be 0. ठीक है, तो ये एंगल 0 होगा. तो what will happen in previous video, like in video where we discuss it Terzaghi bearing capacity theory. सो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था बोथ फाई सॉइल एंड सी सॉइल, कोहेसिव सॉइल एज वेल एज फाई सॉइल के लिए, ठीक है, नॉन कोहेसिव सॉइल. सो यहाँ पे वी विल डिस्कस स्कैम्पटन गिव अप्रोच फॉर ओनली कोहेसिव सॉइल. सो यहाँ पे फाई क्या होगा, 0 होगा. तो जो भी हमारे रिमेनिंग फैक्टर्स थे, जैसे एन गामा और ये जो पैरामीटर्स थे बियरिंग कैपेसिटी के, एन क्यू, एन गामा हमारा 0 बन रहा है, यहाँ पे एन क्यू 1 बन रहा है, ठीक है, तो ये 1 बन रहा है. तो हमारी जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी वो क्या आएगी, वो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होगी सी यू एन सी प्लस सिग्मा एन, सिग्मा बार, आई एम सॉरी. बट नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी, क्यू यू माइनस सिग्मा. तो यहाँ से खाली ये टर्म ही बचेगा नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में. तो इसी चीज को यहाँ पे स्कैम्पटन ने बताया कि नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटन, फॉरगेट दिस थिंग, net ultimate bearing capacity for cohesive soil is equivalent to Cu and C. So C is a cohesion, Cu is a cohesion, NC is a bearing capacity parameter given by Skempton. So this NC, now we are going to discuss about this NC in detail. So this NC will depend on depth of footing and breadth of footing, or we can say NC depends on depth of footing divided by breadth of ratio of this depth upon breadth. Now we will move ahead, we will tell you each and everything what will be the different values for df by db. So the different values will be 0 to 2.5 and greater than 2.5. So let us see what will be the value of NC when df by db equivalent to 0. So first, when case number 1 is when depth of foundation divided by breadth of foundation equivalent to 0. So in this case, value of NC equivalent to 5. For which footing? Strip footing. Strip footing. तो strip footing आपको पता होगा. What is strip footing? It is a kind of footing like we provide for a number of columns in a row. Suppose there are lot of columns in a row. So we need to provide foundation for every individual column. So at this time, what will happen? A situation come when the footing of column 1, column 2, column 3, column 4, they overlap each other, right? They overlap each other. So in this case, we provide a single strip footing for all these columns in a row, and this footing is also provided in case of vertical wall as well. So आपको यहाँ से footing, strip footing का concept समझ आ गया. Now when depth of foundation upon breadth of foundation is equal to 0, so value of NC, Skempton bearing capacity parameter, is equal to 5 for strip footing and NC equivalent to 6 for rectangular footing, number 1, square footing number 2 and circular footing. ठीक है, तो इन सारे footings के लिए value of NC will be equivalent to 6. Now we will come to case number 2. So case number 2 is that when depth of footing divided by breadth of footing
lies between 0 to 2.5. It should not be greater than 2.5 and not be less than 0. So it should be in this range. ठीक है, तो in this case the value of NC equivalent to 5 into 1 plus 0.2 depth upon breadth for strip footing, right? For strip footing, remember that questions will be framed on this and this formula as well. So and value of NC is equivalent to 6 into 1 plus 0.2 depth by breadth for square footing, for square footing, square footing, and the value of NC equivalent to 5 into 1 plus 0.2 breadth upon length of footing into 1 plus 0.2 depth upon breadth. This is for rectangular footing, for rectangular footing. Now coming to case number 3. What is the case number 3? If depth of depth and depth upon breadth of footing. Case number 3 is if when d depth of foundation upon breadth of foundation is greater than 2.5. So in this situation, value of NC equivalent to 7.5 for strip footing, for strip footing, and NC equivalent to 9 for the rest of the footings like square footing, rectangular footing, circular footing. Okay. Now for according to Skempton, so this was all about value of depth of footing by breadth of footing, how they change, and with change of D by B ratio, how NC changes. Now Skempton finally concluded saying that is per Skempton analysis, NC minimum value of NC is equivalent to 5 and maximum value of NC is equivalent to 7.5. This is for strip footing, for ये बहुत ही important है guys, for strip footing. एक बात हुई. सेकंड दूसरी बात ये कही NC minimum equivalent to 6 and NC maximum is equal to 9 for rest of the columns, sorry, for rest of the footings, like square footing, rectangular footing and circular footing. So आपने यहाँ से ये सारा निकाल दिया. तो जब आपको क्वेश्चन में बताया गया अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालो क्ले की, तो आप इस फॉर्मूले में एनसी की वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे कि आप देखेंगे डी बाई बी का रेशियो क्या है, उसी हिसाब से आप निकालेंगे. क्वेश्चन में दिया होगा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बाई ब्रेथ ऑफ फाउंडेशन आपको दिया होगा, सी यू भी आपको दिया होगा, तो आपको खाली एनसी का वैल्यू आपको फाइंड करना है. वो डेप्थ ऑफ फुटिंग बाई ब्रेथ के इसके वैल्यू से आपने एनसी को फाइंड आउट करना है. तो बस बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी जो स्कैम्पटन ने दी वो बस इतना ही है, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी. अगर आपको अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है तो इसमें आप क्या ऐड करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेसेस ऐड करेंगे. वो क्या होता है, गामा इंटू हाइट, कि कितना सरचार्ज है, कितनी सॉइल है फाउंडेशन से लेके ऊपर तक. ठीक है, तो ये इजीली आप निकाल सकते हैं. ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका कंसेप्ट रिगार्डिंग स्कैम्पटन बियरिंग कैपेसिटी फार्मूला क्लियर हो चुका होगा. स्कैम्पटन ने खाली क्लेई सॉइल के लिए बियरिंग कैपेसिटी निकालने को कहा. ठीक है, सो वी विल बी विथ नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट टाइम. टिल देन यू टेक केयर.